Hello everyone, I welcome you all to Meta IS, and today we will study the Mains 365 social issues, and we'll focus on women related aspects so that so that 2-3 questions which are asked every year in mains examination in paper 1 or in paper 2 as well. So paper 2 more like social justice and paper 1 is social issues. So both are the things linked. We'll study these things in integration, and we'll focus on some data and some schemes which we can use to enhance our answer. We are not going to study thoroughly, like पॉइंट बाई पॉइंट नहीं पढ़ना है हमको बहुत कुछ, बस हम इम्पॉर्टेंट डेटा देखेंगे और इम्पॉर्टेंट कोई भी ऐसा फैक्ट जो हम यूज कर सकते हैं एग्जामिनेशन में. सो बेसिकली इज अ booster, so value addition kind of video. So basically one data is which is very important, like women labor force participation, that is 32%. this can be used in introduction, like कोई भी अगर क्वेश्चन वर्क फोर्स से रिलेटेड आता है तो हम उसमें इंट्रोडक्शन के तौर पे इसको यूज कर सकते हैं. ये हमारा एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है, ठीक है. पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो होता है PLFS, एंड देन अगर हम इसका काउंटर पार्ट देखें तो मेन का जो है वो 77% है, एंड इट हैज़ रिड्यूस फ्रॉम 42% टू 32%. अगर सिंस 2004 एंड 5 की हम बात करें तो 42% से अभी 32% हो गया है. दिस इज़ वन डेटा, एंड वी ऑल नो दैट वुमेन आर डिस्प्रोपोर्शनेटली हाई रिप्रेजेंटेड इन पिंक कॉलर जॉब्स. सो ये एक यूज किया जाता है पिंक कॉलर जॉब्स, वाइट कॉलर जॉब एंड ब्लू कॉलर जॉब. तो वाइट एंड ब्लू में वुमेन आर नॉट रिप्रेजेंटेड वेल, एंड इन पिंक कॉलर जॉब्स दे आर हाईली skewedly high represented. So basically pink collar jobs are teaching and nannies and household care at home. These are basically low wage or no wage work, ठीक है. And second data is that if we increase the gender equality, if we maintain, if we can ensure the gender equality, अगर हम gender equality को ensure कर लें, then we will be able to increase the GDP by 1.4% in a particular year. This is also very important. Okay, and then अगेन अगर हम बात करें तो अगर हम जेंडर इक्वालिटी को अचीव करते हैं तो हमारे 2 गोल्स और अचीव हो जाएंगे, दैट इज़ the SDG 1 and SDG 5, like no poverty and gender equality. So this is also used in context of women, like SDG 1 and SDG 5. The third data is that digital divide. अगर हम डिजिटल डिवाइड की बात करें तो ओनली 35% वुमेन यूज द इंटरनेट, वुमेन. सो दिस इज़ वेरी ह्यूज. ओके, सो डिजिटल डिवाइड डेटा कैन बी used, and then global gender gap report by economic forum, where India falls at 135th out of 146, which is also very poor. So these are the things which we have to keep in mind before writing our mains examination. अगर हम वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट की बात करें तो वहाँ पर हम देखते हैं कि मेन जो हैं वो 82% ऑफ लेबर इनकम को कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है. दीज आर द डेटा. अगर हम इनिशिएटिव्स की बात करें, व्हाट आर द इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, इसका अमेंडमेंट करके 12 वीक्स टू 26 वीक्स को हमने मैटरनिटी बेनिफिट को इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है. दिस इज़ वन इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. Code on occupational safety and health and working condition. Code on occupational safety and health and working condition, which basically defines the number of hours and in which conditions women should work. So इस code के through women को night work was allowed. Okay, so this is also one initiative. And then code of wages. Code of wages, it prohibits the discriminatory wages, like men and women, if they are doing the same work then they will get the same wages.
and the other schemes like Kausal Vikas Yojana, Mission Shakti, which is a comprehensive umbrella scheme for safety, security, and empowerment of women. Safety, security, and empowerment of women. सेफ्टी सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के लिए मिशन शक्ति चला रहे हैं, ठीक है. प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट, POSH, अगेंस्ट सेफ्टी सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट वुमेन रिलेटेड एक्ट एंड विशाखा गाइडलाइंस. Okay, and then this is G20 Empower. So G20 Alliance for Empowerment and Progression of Women's Economic Representation. Empowerment and Women's Economic Representation. Okay, so these are the initiatives which you should keep in mind. Apart from the Ministry of Women Child Development, की जो भी initiatives हैं like One Stop Center, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, these are all umbrella schemes, but for the workplace related empowerment, these are basic initiative you can keep in your mind. POSH, अगर हम POSH रखते हैं, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट 1993 एंड विशाखा गाइडलाइंस. Okay, so these are the things. Now the next topic is that permanent commission for women, okay, in armed forces basically. So permanent commission का मतलब होता है कि अभी वुमेन रिटायरमेंट 14 ईयर से ऊपर रिटायरमेंट एज तक सर्विस दे सकती हैं इन आर्म फोर्सेस, ठीक है. पहले ये 10 ईयर की सर्विस रहती थी, शॉर्ट सर्विस कमीशन. तो SSC रहता था शॉर्ट सर्विस कमीशन फॉर 10 ईयर्स plus 4 year extension, but now women can serve in armed forces for up to the retirement. अगर हम वुमेन का रिप्रेजेंटेशन देखें तो आर्मी में 0.56% है, एयर फोर्स में है तुम्हारा 1.08% एंड नेवी में है तुम्हारा 6.5%. बेसिकली दिस इज फॉर एयर फोर्स एंड दिस इज फॉर नेवी. So Navy is 6.5%, Air Force is 1.8%, Army is 5.56%. Okay, जिस परमानेंट कमीशन, ये जो परमानेंट कमीशन का स्टेटस प्रोवाइड किया गया, ये जो केस था बबीता पूनिया केस. ओके, ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट. बबीता पूनिया केस, सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वर्सेस द बबीता पूनिया केस. सुप्रीम कोर्ट प्रोवाइडेड द स्टेटस ऑफ परमानेंट कमीशन टू वुमेन, ठीक है. अगर हम ये तो इसके बाद जो भी आर्गूमेंट्स, नॉन आर्गूमेंट, वो सब तुम अपने आप से कर सकते हो. दीज आर द फैक्ट्स. लाइक बबीता पूनिया के सीधे यूज करो कहीं भी कि दीज आर द पॉलिसी इनिशिएटिव टेकन बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भी हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है. वुमेन इन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स. अगर हम इसकी बात करें तो 18% वुमेन आर इन STEM and men are 35%. So basically there is a difference, huge difference, आधा डिफरेंस है बेसिकली. ओके, सो अगर हम इनिशिएटिव्स की बात करें कि स्टेप्स में इंक्रीज़ करने के लिए इनिशिएटिव क्या है, तो विज्ञान ज्योति स्कीम है जो कि 10th क्लास गर्ल्स को मेंटर करती हैं, ठीक है. मेरिटोरियस गर्ल्स को स्टेम में पार्टिसिपेट करने के लिए, स्टेम्स में ज्वाइन करने के लिए इनकरेज करती हैं बेसिकली ज्ञान ज्योति स्कीम. किरण जो है, किरण स्कीम है. किरण स्कीम क्या करती है, नॉलेज, किरण का फुल फॉर्म है नॉलेज इन्वॉल्वमेंट रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग. बेसिकली ये नर्चर कर रहे हैं जो भी साइंटिस्ट होते हैं, इनकरेज वुमेन साइंटिस्ट थ्रू वेरियस प्रोग्राम्स इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक. सो इनकरेज कर रहे हैं बेसिकली वुमेन साइंटिस्ट को. गति, व्हाट इज गति, जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस. सो ये फैसिलिटेट कर रहे हैं स्टेम को थ्रू इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स. गति इज फॉर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स.
Curie scheme is for university research, provides support to women universities in improving their R&D facilities. Basically जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो R&D फैसिलिटी इंक्रीज कर सकें. For that there is a Curie scheme. Biocare scheme is for the career, जो भी वुमेन हैं साइंटिस्ट अप टू 45 ईयर्स, वुमेन साइंटिस्ट अप टू 45 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, फॉर करियर डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयड or unemployed women scientist up to 45 years of age whom it is the first extramural research grant. बेसिकली री एंट्री की बात कर रहे हैं, रीओरिएंटेशन, बायोटेक्नोलॉजी करियर एडवांसमेंट एंड रीओरिएंटेशन प्रोग्राम, and then C STEM. So these are the basically schemes. विज्ञान ज्योति, किरण, गति, क्यूरी, बायोकेयर, ये डायरेक्टली यूज करनी है आपको जब भी स्टेम की बात आए तो. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज केयर इकोनॉमी. अभी वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री emphasized that care economy has the potential of creating 300 million jobs and 80% led by the women. 300 million jobs, and this is most of this thing is led by the